All right, so hi guys, a very warm welcome everyone joining us here at BYJU'S Exam Prep. बहुत स्वागत, a very warm welcome. I'm sure all of you would be super duper excited because today I have with me Mahira Gupta, who I am, a real proud teacher, mentor. मैं ये कह सकता हूँ आपको, ये है जी मेरी अर्जुन, मैं हूँ इनका गुरु द्रोणाचार्य. ठीक है. तो she basically has secured All India rank 90 in CLAT 2021, one of the toughest CLAT exams that there were. She aced it with flying colors while she was there in her 12th standard. So someone who's been there, done that, and aced the new pattern and is now studying at NALSAR, Hyderabad, right? So join me, in welcoming Mahira. बहुत स्वागत Mahira. सर थैंक यू सो मच. और बिल्कुल सही बोला आपने ही कराया है. और मेरे को तो कोई भी अगर टिप्स मांगते हैं, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ लिसन टू अभिमन्यु सर, वो ही कराते हैं क्लास सबका. सबका तो पता नहीं, पर आपका मतलब बड़ा मजा आया आपके साथ, आपको मेंटर करने में भी, बिकॉज जितना जो भी आपको कभी भी बोला कि ये करना है, दिस इज व्हाट यू सपोज्ड टू डू, यू ऑलवेज डिड मच मोर देन यू वर एक्चुअली टोल्ड. सो दैट इज बेसिकली द मंत्र फॉर सक्सेस. जो भी आपके मेंटर्स बोले उससे दो चीज ज्यादा कीजिए, right? And you are a perfect example to interact with the students right now. आज ये सेशन जो आपके साथ बात करने वाले, आई एम श्योर इतना सब कुछ उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, इतना मजा आने वाला है उनको, बिकॉज क्योंकि आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है उसमें आई हैव फर्स्ट हैंड सीन ऑल द अप्स एंड डाउन्स एज वेल. तो बहुत सारी अभी चिंताएं भी हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि फरवरी है, वही बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो काफी जरूरत थी इस सेशन की. तो मायरा, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि मतलब हाउ इट ऑल स्टार्टेड. फटाफट से आपकी प्रिपरेशन की हम बात करते हैं. आपने कब से स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, कैसे स्टार्ट करी, हाउ वर थिंग्स व्हेन यू स्टार्टेड, प्लीज. सो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2020 फरवरी, सो दिस टाइम अराउंड इटसेल्फ. एंड मेरी प्रिपरेशन मतलब जब स्टार्ट करी थी तो मैंने ये नहीं सोचा था, मतलब पैंडेमिक तो किसी ने भी नहीं सोचा था, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू स्टडी फ्रॉम होम. I always wanted to interact with a lot of people and interact with mentors and have the whole preparation experience, which didn't happen. So my entire preparation was done from this very table itself, this very room. यहीं से start किया था और आज मैं यहीं से बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ. Amazing. हाँ जी, please carry on. तो प्रिपरेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कराता है, आपके मेंटर्स बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट को भी याद रखना कि मेंटर आपको दिखा देंगे कि आपको जाना कहाँ है, चल के आपको खुद जाना है. तो मेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 50% मेंटर, 50% यू डू द एफर्ट. तो जो आपका वाला एफर्ट है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो अब आपने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी तब आई एम श्योर काफी आपको रिजर्वेशंस होंगे, आपको यू वर नॉट कॉन्फिडेंट प्रोबेबली कि यार उस टाइम पे आपको नहीं लगा होगा ना कि मैं एकदम मतलब भूमि मचा दूंगी मतलब इसमें इस एग्जाम में. तो ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कब आया कि यार हाँ मैं क्लैट एग्जाम जो है मैं क्रैक कर सकती हूँ, आई कैन डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम. ये कॉन्फिडेंस कब आया, कौन से महीने में जाके आपको ये लगा कि ऐसा होगा? I would say that this confidence, it keeps faltering throughout your preparation. Some days you'll be very confident, sometimes you won't be confident at all. But I think from the very beginning, I had a sense in me that if I put in my 100%, I will get a good rank. Now to have the confidence that I'll get such a good rank, वो तो तब तक भी नहीं आया जब रैंक आ गई, उसके बाद it was a little unbelievable. But I think to start with the confidence in yourself, that if I do the effort, I am capable. It's not something which is impossible. So I think I had that confidence from the very beginning. I think it went really down when I gave my first mock, and I got I think 45 in my first CLAT mock, and then I called Abhimanyu sir and said, sorry sir, I'm not giving any more mocks. So it will keep faltering, but having confidence in yourself, believing in yourself from the very day one, it will allow you to consistently study throughout the entire time. Absolutely. तो आपने बताया अपने पहले मॉक के बारे में कि भाई काफी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था. तो उसके बाद आपने मॉक्स तो बहुत सारे आपने मॉक्स दिए, प्रीवियस ईयर भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स किए. तो आपके
आज की डेट में मतलब 145 45 अगर किसी के आ रहे हैं मार्क्स और वो चाहते हैं कि भाई 150 में से अच्छे नंबर लाए कंसिस्टेंटली डबल, जैसा हम कहते हैं कि भाई डबल इट अप, राइट? तो 45 50 अगर आ रहे हैं, हाउ कैन दे डबल इट अप? क्या आप एडवाइस करेंगे उनको? Analysis of mocks is very important because I've seen that people attempt mocks and forget about it. बिकॉज हमें स्कूल से यही आदत होती है कि एग्जाम हो गया, दोबारा सेम सिलेबस तो कभी होना ही नहीं है, तो कट आवर लॉसेस एंड मूव ऑन विद इट. एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसा नहीं हुआ था कि आई गेव माय फर्स्ट मॉक एंड द सेकंड मॉक आई डबल्ड इट अप. इट डिडंट हैपन. 2 3 4 5, दिस इज हाउ यू ग्रो. So it is very important to analyze where you went wrong, and this is not something that will happen after 2 3 mocks. Now I gave, I think, around 90 mocks, including 10 years, previous 10 years. So I'm not saying that that's the ideal number of mocks you should give, but if you don't give a lot of mocks, तो आप analyze ही नहीं कर पाओगे कि this is the subject I'm erasing in, and you will not discover new questions. So I think शुरू में you don't have to give so much importance to marks. Consider it as learning experience. It is your study material. Again, school की system से निकलना, क्योंकि school में you study and give a test. Now you give test and you study through that only. So consider it study material. Don't let marks demotivate you, which is very ironic coming from me because I would be very demotivated after every mock. So analyze where you went wrong. See if you're making continuous mistakes in the same topic. In that case, work on the topic, and most importantly, learn to move on from a mock. Keep हो गया, analyze कर लिया, learn something from it, and then move on to the next one. That is, I think, the only way you can improve. Absolutely. Well said, Mahira. तो मायरा फर्स्ट मॉक से 45, और यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि हाउ मेनी, आदित्य ने पूछा है हाउ मच मार्क्स डिड यू सिक्योर इन योर लास्ट मॉक? तो लगभग क्या आ रहा था आपका एवरेज स्कोर्स इन योर लास्ट मॉक्स? I think towards the last mocks I was getting 99, 98, 99, and in the final CLAT exam I got 103.75. So it was an all-time high for me also. देख लीजिए दोस्तों, मॉक्स में कभी इनका वो बैरियर क्रॉस नहीं हुआ, बट जैसा कि इन्होंने बताया मेन एग्जाम है वेर इट मैटर्ड द मोस्ट, उस टाइम इन्होंने सेंचुरी लगा दी. तो यही है, हमें यही समझना है भाई कि आज अगर आपका मॉक का स्कोर कम भी है, दैट डज नॉट मीन कि आप वही हाल रहेगा हमारा आने वाले महीनों में भी. देयर इज अ जर्नी, जैसा कि इन्होंने बोला एनालिसिस की भी बात करते हैं मायरा, क्योंकि शुरू में आई रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि एनालिसिस में जितना टाइम आप लगा रहे हो मॉक में, उससे ज्यादा टाइम लगाना है एनालिसिस में. तो आपने वो लगाया, और जब इतने सारे मॉक्स आपने दे दिए थे, उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था कि एनालिसिस जो है वो एकदम ही कम टाइम में हो जाना चाहिए, तो वो भी आपने कर दिया. तो एनालिसिस को किसी आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता कि हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स. तो आप बताइए, मतलब लॉन्ग वर्जन भी शॉर्ट वर्जन भी प्लीज बताइएगा, ताकि स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं उनको समझ में आए कि हाउ टू गो अबाउट एनालिसिस. Analysis. So first, what you do is giving only online mocks is not sufficient, क्योंकि जो एक्शन पेपर है वो ऑफलाइन ही होगा. Practice on OMRs. That is very important because OMR takes a lot of time. और एक गलत सर्कल पे आपने पेन टच भी कर दिया, so that is your option now. आप चेंज नहीं कर सकते हो. So that is something, if you're losing 1 or 2 marks in such a stupid mistake, that is very sad. और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो expect at least 1 mistake like this in the main exam, which you cannot afford to make. Now analysis, सबसे पहले you see which section you have done worse in. I would always start from worse to better. It just works for me. तो उसके बाद आप question को देखो, and you without looking at the answer, now you try to solve the question without a time constraint. So you see that is it a time problem or is it a concept problem. Now you solve. If you get the answer, you know that you need to find maybe other techniques or you need to become faster in it. If you do not understand, then you see which concept it is from. फिर आप ये देखो कि उस concept के आपके कितने questions wrong हुए. अगर एक हुआ तो maybe it's because it was a new question, you didn't know it. तो फिर you find those questions and you practice from it. Now if you spend I think 3 hours doing the paper, then you will be spending 4-5 hours analyzing it. Because it's a long process. But if you do not do a very deep analysis, you cannot expect improvement.
सेम गलतियां बार बार करके कोई फायदा नहीं है. इन डेप्थ एनालिसिस आई वुड स्टिल से दैट इज more preferable. And yes, so then you narrow down which concepts you need help with. If there is some technique that you think you're missing, go back to your mentor, go back to your concept, and note it down. Next time you do a mock, see if those mistakes have been repeated. I think since CLAT has such a varied number of questions, and even in the actual paper, there will be questions that will be completely new to you. You'll have no idea how to deal with them. So you need to leave for errors there. That you need to leave those questions, or if there's a doubt, so you can afford to lose marks there, but repeated mistakes and making them in the main exam itself, I think that is a very sad thing you can do. It is a completely preventable loss of marks. Absolutely. Well said, Mahira. दोस्तों जो भी इन्होंने कहा इम्प्लीमेंट इट टू द टी, राइट, कि जो भी क्वेश्चन है पहले आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए वेदर इट्स बिकॉज ऑफ टाइम और वेदर इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, राइट. तो ये आप आइडेंटिफाई कीजिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से आपसे नहीं हुआ या फिर मार्क्स की वजह से या फिर सॉरी टाइम की वजह से आपसे नहीं हुआ. सो उसको आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसी हिसाब से आप अपनी जो भी लर्निंग्स है उस पर्टिकुलर मॉक की वो आप लेके जाइए इन द सब्सिक्वेंट मॉक. सो ब्रिलियंट. जैसा कि मैंने कहा था भाई एनालिसिस के लिए इनसे बेहतर आपको कोई गाइड जो है वो नहीं कर सकता. मायरा, जब एनालिसिस के बाद एक और बात आती है सब्जेक्ट वाइज, एक बार थोड़ा सा अपन रन कर लेते हैं क्योंकि मौका इतना अच्छा है. मैं चाहूंगा कि जितने क्वेश्चन आपसे फटाफट से पूछ लूं. आज मैं थोड़ा बहुत ही ज्यादा कम बोलना चाहता हूँ, आपको मैं बहुत ज्यादा बुलवाना चाहता हूँ. तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, प्लीज रन अस थ्रू द एंटायर सेक्शन. हाउ डिड यू गो अबाउट थिंग्स? क्या आपने लिखकर कैसे याद किया, क्योंकि आपको भी भाई मेमोरी कैसे रिटेन होगा क्या नहीं होगा, ये सारे डाउट्स आपके भी मन में आ ही रहते. तो जनरल अवेयरनेस के लिए कैसे प्रिपरेशन किया? और क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है खुद का, वो आपकी पूरी जर्नी का, टीचर्स की लर्निंग्स का भी सब कुछ एक्सपीरियंस है, अब आपको कोई अगर पूछेगा तो आप उन्हें कैसे गाइड करेंगी जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए? जनरल अवेयरनेस, तो सर आप कह तो रहे कि आज आप कम बोलेंगे मैं ज्यादा बोलूंगी, बट आई वांट एवरीबॉडी टू नो कि मैं आपको वही सब बता रही हूँ जो सर ने मुझे टाइम पे बताया था कि आई एम पासिंग ऑन हिज लर्निंग्स टू यू मोर देन माय लर्निंग. So general awareness के लिए what I did was, so I think general awareness I made a lot of mistakes while preparing because it is a very scary subject. Because general awareness कभी खत्म होता नहीं है, बस शुरू हो जाता है. You once get into it and then it does not finish. So a lot of times you will end up doing things that are not relevant CLAT wise, and you will do things that you just find interesting. I think that is very wrong. So and a lot of people they say that you should read newspapers. I personally did not benefit anything from newspaper for general awareness. It is more of English. What I would say was that every day identify 2-3 topics that you think are important. Now since you are preparing for CLAT, आपको कुछ आइडिया तो होगा ही कि क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं. Then I think there are compendiums also. So go through the compendium. लेकिन compendium खत्म करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता है. उसमें से you take each topic and you Google it up. Again, ये straight sir की advice है जो मैं आपको बता रही हूँ. Google it and read 2-3 articles on it. Now I know it sounds very cumbersome. It takes a lot of time and you will want to find shortcuts. पर इसका कोई shortcut नहीं है. आप जितना narrow करते जा रहे हो, आप उतने ज्यादा space बढ़ा रहे हो ऐसे questions आने की जो आपने नहीं करे हो. Like CLAT 2021, the current affairs, it was completely unpredictable. It was all irrelevant things. पर वो मुझे आते थे क्योंकि मैंने irrelevant चीजों पे भी पढ़ लिया. And I hated it. I would never want to do it again. But this is how you do it. CLAT preparation की कुछ चीजें आपको बहुत ही खराब लगेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप skip कर दो. One thing I absolutely did not like was sports news. Fortunately वो नहीं आई, but then I did do it. I followed up on cricket. I think that happened IPL and everything. And I still remember how much I disliked it, but I did it. One more advice would be do general awareness from websites which actually provide material for IAS exams. Now I know आपको लगेगा कि IAS तो बहुत बड़ी चीज होती है, but the pattern is actually very similar. क्योंकि कोई भी टॉपिक के बारे में एक साथ काफी नहीं है. You need very in-depth entire subject matter. I have found that IAS websites, they provide it in a very good manner. They'll give you a little history or little what to expect. So I think that, and there's a website called Drishti IAS. Use that.
I found that very helpful. और ये चीज मुझे एग्जाम से एक महीने पहले ही रियलाइज हुई थी. I would suggest आप लोग अभी से स्टार्ट कर लो. One more thing was sir would always say that write and make notes. और मैंने ये नहीं किया. मैंने बोला no sir, मेरे को दिमाग में याद रहता है. This is also 1 month prior to the exam. I realized कि ऐसा नहीं होता है. You cannot remember 12 months current affairs, and writing helps a lot. So try it out, and yeah, I would suggest abhi try kar lo rather than 1 month before like I did. Absolutely, yeah, well said. But ये भी है दोस्तों, जैसे कि मायरा बोल रही है, पर actually it actually depends on the individual to individual. जैसे मायरा could retain it without writing it, right? तो उस क्योंकि अच्छा स्कोर कर रही थी ये लगातार मॉक्स में भी, right? But she's being too humble और she's being too nice इस चीज के लिए. But मतलब she basically इनको जरूरत नहीं थी लिखकर याद रखने की. But अगर आप लिखकर करते हैं, if you're someone who's average or below average, right, in terms of retaining things, right, तो उस केस में you can write things. It will definitely, जैसे इन्होंने बोला, हेल्प करेंगी आपको for sure, राइट. तो मायरा ये तो हो गया जी जनरल अवेयरनेस के लिए, बहुत ही ब्रिलियंटली आपने बताया. मायरा का देखो एकदम ही अलग थोड़ा सा एस्पेक्ट है. इन्होंने बताया कि भाई न्यूज़पेपर पे अगर आप इतना फोकस ना भी करें, आइडेंटिफाई, व्हाई आर वी रीडिंग न्यूज़पेपर्स? टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इश्यूज, राइट. इफ यू कैन आइडेंटिफाई द इश्यूज विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड यू ऑलरेडी गुड एट रीडिंग, आपकी रीडिंग हैबिट ऑलरेडी अच्छी है, तब आप कुछ और सोर्सेज भी आप रेफर कर सकते हैं. अदरवाइज जैसा कि इन्होंने बोला कि वर्बल एबिलिटी के लिए भी हेल्प हो रही है न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हो, तो वो समझ के भी कर सकते हैं, है ना. चलिए, अब मायरा रीडिंग की बात करते हैं. मैं जानता हूँ आपकी तो रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी शुरू से ही, और काफी आपको इसमें हेल्प भी मिली होगी. बट आई एम श्योर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग तो आपकी इंप्रूव धीरे धीरे जरूर हुई होगी रीडिंग भी. तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए और गाइड भी कर दीजिए स्टूडेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं कि हाउ टू गो अबाउट इंक्रीजिंग देयर रीडिंग स्पीड. व्हाट विल बी योर टिप्स? Reading speed. So is saying that I had a good reading speed. I would not deny it, but it was not up to the CLAT level. Because CLAT may not only do you need to read very, very fast, you also need to be 100% focused. You can't afford to go over a passage again. एक बार में ही you have to retain what you want to retain. And for every subject, even for maths, reading is important. So developing reading speed, I would say time. I hope that with the whole CLAT mocks, you're also giving section-wise tests. Those are also important for section-wise improvement. So I mean, this is very common. सबको पता ही होता है that 1 minute for one question. This don't take it to the. This is not very accurate. You can take a little more than 1 minute on some questions, but then you have to take a little less than 1 minute on some questions also. And as impossible as it sounds, after some time होने लगता है automatically. Now reading fast, I would say that time. If you're reading a passage from Hindu, now Hindu does not only have difficult vocabulary; the language is also complicated. I would say the editorials of Hindu are wonderful practice for reading, because even when you have time, you take a lot of time to grasp what they're actually trying to say to get the essence. A CLAT में जो questions आते हैं, they require you to understand the passage very deeply, something you're not used to in school. So what you do is you see how many words the passage is. If not words, then maybe have some idea of the size, and then time it. Time how much time it took, and then try to answer 3 questions. Did you understand what the passage was about? If they ask you the main point of the passage, these are two different things: the main idea and the main point. These, I think, yeah. So you must have learned some techniques, that something which is mentioned in the first paragraph, that is usually the main point. Something you can derive from the entire passage, that is the main theme. These are the very small intricacies, and the options are often very, very close between these two options. And 3, how many new words did you learn? There will be a lot of new words, so look them up. And सिर्फ word का meaning search करने से आपको उसका meaning कभी याद नहीं रहेगा. So what you do is you put it in a sentence. You relate it with your life. फिर से सर की ये एडवाइस थी कि आप जिस चीज को लर्न करना चाह रहे हो उससे जितने ज्यादा कनेक्शंस बनाओगे आपको उतना ज्यादा याद रहेगा. So there is a word and you try to apply it in your real life situation. Use it with your family. Use it in your everyday conversation. And then you remember the meanings of it. So keep doing this and keep a track of how much time it is taking you. And if you're not progressively improving, and I think this improvement takes place every day. Every day you need to improve a little. Do it for a month, for
2 months, and you realize that that your speed has, you will, but maybe even 5-6 seconds, they make a lot of difference in class. Even if you're improving by that much, I think that will be a lot of help. Absolutely, well said, Mahira. तो दोस्तों वो कैब के लिए भी यहाँ पे कुछ आपको टिप्स मिल चुकी हैं, आई एम श्योर। आप जिनका भी क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू वो कैब ऑल्सो, उनको भी काफी हद तक आंसर मिल गया होगा। इन्होंने काफी अच्छे से गाइड किया और ये भी बताया हाउ टू यूज देम एज वेल, राइट? तो ये करके इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रिटेन देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मायरा, अब काफी लोग मुझे बोल रहे हैं, ईशान भी बोल रहे हैं, आदित्य ने भी बोला है, सभी लोग बोल रहे हैं कि सर प्लीज आस्क हर अबाउट सीआर, क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर काफी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहे हैं बच्चे, कि हाउ डू वी प्रिपेयर अबाउट देम एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर, और कैसे अपने मार्क्स वहां पे आपने इंक्रीज किए। आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है शायद। we'll quickly fix this guys, अभी फटाफट से हम एक बार इसको फिक्स कर देंगे। तब तक के लिए मैं आपको कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस थे वो मैं उनका आंसर जरूर कर देता हूँ। सीआर अब उसके बाद हम जरूर लेंगे इनके बारे में। एनलेस बैंगलोर, यस, शी जस्ट मिस्ड एनलेस बैंगलोर बाय जस्ट So many, it is totally understandable. It is एक सेकंड, आई थिंक मायरा आपका थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टरबेंस है। difficult. Is it fine now? मायरा, if I'm audible, एक बार आपके यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, उसको प्लीज आप सॉर्ट कर दीजिए। चलिए, जब तक मायरा का इंटरनेट जब तक वो फिक्स हो रहा है, अब क्विक Q&A कर लेते हैं हम फटाफट से। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप लोगों के, हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू द एडिटोरियल ऑफ हिंदू। दोस्त, जब भी कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो सबसे पहले हैव अ वॉच ऑन यू, एक अपने पास घड़ी रखिए, कितना टाइम आपको डेली बेसिस पे आपको लग रहा है सिमिलर लेंथ ऑफ आर्टिकल पढ़ने में, उसको ट्रैक कीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इज देयर एन इम्प्रूवमेंट इन योर रीडिंग स्पीड, ये आप गॉज कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, टाइम अपने आप को करते रहिएगा। आप देखेंगे आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स यू विल start to read the same length of article in a much less amount of time। तो ये जरूर कीजिएगा। स्पीड रीडिंग की ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब तक मायरा वापस से में ज्वाइन करती हैं, आई थिंक फटाफट से शी विल बी बैक एंड स्टार्ट आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस, सारी क्वेरी आपके। सर कैन यू गिव सम टिप्स फॉर सीआर के लिए? यार अभी मायरा से जरूर पूछेंगे, बट यही है यार, प्रैक्टिस इज द गेम, राइट? द मोर मॉक्स यू गिव, राइट, द बेटर chances of you encountering the same kind of questions in your exam। तो सीआर में जितने मॉक्स दोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो उन टॉपिक्स को आप एक बाय एक करके, वन बाय वन, यू कैन प्रिपेयर ऑल दो सब्जेक्ट्स, ऑल दो टॉपिक्स, एंड वहां से ग्रेजुअली यू कैन बिल्ड ऑन योर क्रिटिकल रीजनिंग मार्क्स। क्रिटिकल रीजनिंग इज समथिंग विच यू कैन गेट बेटर एट विद प्रैक्टिस। उसके लिए अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो तो आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज जरूर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम मायरा, इफ आई एम ऑडिबल, जल्दी से आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। चलिए, तो अभी आ रही हैं जब तक। Sir, ask her, does she read question first and go for passage, or read passage first and go for questions? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साई, डेफिनेटली विल आस्क her। मॉक में एवरेज कितने मार्क्स अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे पूछा है द किंग डेविल गेमिंग ने। हाउ मच मार्क्स आर एवरेज, कितने मार्क्स आने चाहिए मॉक टेस्ट्स में? दोस्तों, जब हम मॉक्स की बात कर रहे हैं तो मॉक्स में एवरेज स्कोर जो है आपका, आपको एम करना चाहिए कंसिस्टेंटली आपके मॉक का स्कोर बढ़ता रहे, राइट? अगर आज आपके आ रहे हैं लेट्स से 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो आने वाले 3 से 4 मॉक्स बाद आपका स्कोर 70 पहुंचना है, उसके बाद 80 कैसे पहुंचना है, उसके लिए प्लान करते रहना है आपको लगातार कंटिन्यूअसली, राइट? जब आप वो कर लेंगे यू विल बी pretty much sorted। I think Mahira has joined back। Mahira, please feel free to come again।
तो मायरा, यहाँ पे कई बच्चों ने काफी क्वेश्चन पूछे और बोला है कि भाई सर ये क्रिटिकल रीजनिंग का आंसर दिए बिना उनको जाने मत देना, कुछ भी हो जाए उनको वापस लेकर आओ। ठीक है, नो नेटवर्क प्रॉब्लम कैन यू नो help or save you from sharing critical reasoning की जितने भी क्वेश्चंस है हमारे। तो मायरा, am I audible, visible? थोड़ा सा इनके एंड पे नेटवर्क इश्यूज है, देख लो दोस्तों। नलसार में जब आप चले जाते हो उसके बाद देखिए आप मतलब काफी ज्यादा आपकी जो भी एडवाइस है उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज शी इज समवन हु हैज एज्ड इट। तो जो भी वो शेयर करेंगी, मेक श्योर यू ऑल इम्प्लीमेंट देम टू द टी, राइट। जितना भी जो भी वो बोले ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा इनको, क्योंकि ये सब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। शी इज बैक, राइट मायरा, एम आई ऑडिबल? Yes, so sorry guys. It's just, your Wi-Fi will work fine and the moment you want it to, it won't. I am so sorry. That's okay, that's okay, होता है, सबके साथ होता है। चलिए मायरा, तो सीआर, राइट, सीआर क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन है। आपसे ज्यादा बेहतर कोई इंसान क्या ही गाइड कर पाएगा, समवन हु हैज aced the exam with flying colors। तो बताइए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए हाउ टू गो अबाउट थिंग, बताइए। Critical reasoning, it is something which again you need to develop a skill. I think after some time you'll just look at the options and you know what is the answer, but it takes a lot of effort to reach to that point. And sometimes you just don't understand the answer आने के बाद भी कि what was the explanation behind it, how did you reach it there. Now what I did was, there's an exam called GMAT, which is, I don't know, I think it is for management, and it has a very high level of CR. Now it has a lot of questions. I think around 500, and this is a level above what you can expect in CLAT. Correct. So I'm sorry, is there a lag again? So I practiced from GMAT. I did very high level CR, and what came in CLAT, it was nothing for me. It was very, very easy for me because I did it from such a high level. So since you guys have 3 months, I think that is enough. Practice CR from there. Not only does it have very good questions, it has extremely excellent answers. So you know how to think when you see a question. So I would highly suggest doing it from that book. So whenever there was an incorrect question that you attempted, you asked yourself the question, why is option D the correct one, right? And there was an explanation given in the book as well? Yeah, there is an explanation given in the book as well. Now what you do in CR is, you look at the 4 options and you decide if answer A is the answer or not. You know it's not the answer, but you should have a ready explanation of why it is not the answer. CR, I think it is better if you practice it without a time constraint in the beginning, so you understand how to solve the question itself. So you acquire the skill. You look at 4 options and you know that one is right, but you should also know why the other 4 are wrong. So you know it's not just a stroke of luck that you got it right, that you have understood the concept. So it is very important to know that. And no matter, whenever you practice questions, you mark yourself. You do 10 questions and you see that, okay, I did 5 right, and you negatively mark yourself. Because 5 on 10 seems that, okay, I got 50%. But the moment you start negatively marking, that will further go down to 2.5. So no matter, whenever you practice questions, always mark yourself and negatively mark yourself. Because negative marking, it will take down your score if you're not prepared for it. So you know when to skip and when to not. So always marking yourself negatively, that is very, very important. Absolutely, well said मायरा। तो दोस्तों ये देख सकते हो, मायरा ने टिप दी है आपको, जीमैट की कोई भी प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हैं, राइट। आपके लिए मतलब एक लेवल हायर रहेगी वो, तो वो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं सीआर का, या फिर आप बायजूस एग्जाम प्रेप का स्टडी मटेरियल जो है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। जो स्टडी मटेरियल है आप प्रैक्टिस कीजिए, द मोर यू प्रैक्टिस, एंड जो आंसर की है यूज इट जुडिशियसली, फाइंड आउट व्हाई इज माय आंसर द इनकरेक्ट वन, व्हाई इज द करेक्ट वन करेक्ट, इसके ऊपर फोकस कीजिए। आई एम श्योर टाइम लगता है, ये बोरिंग भी लगता होगा मायरा,
but you have to keep Definitely. it. बोरिंग है बट फिर भी करना है. तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? बोरिंग है आपने कहा डेफिनेटली, तो आपकी आग कैसे जल रही थी? You know, you don't view it as a problem, you view it as a challenge. You tell yourself that there are some parts of the preparation that I am going to like, and there are some parts that you're going to dislike. You're going to, extremely hate it. And I felt that way for quite a lot of things. But that does not mean that you give them up. You view it as a challenge. That if that's so what if it is boring, you just hang in there. You don't see if you like it or not. Don't count on what you like. Count on discipline. That I've decided. So I am going to follow up on my commitment. And after a week of boring and you see a increase in your marks, suddenly it will not be boring. It will be a lot of fun. And I think critical reasoning, if you practice all the questions that are in GMAT, you are going to, I think CR is going to become the easiest thing for you. Practice such a high level that CLAT starts to seem easy for you. I think that is the goal. Absolutely. Well said. Well said. So from where did she give mock? I'm sure she gave basically a plethora of mocks, plenty of mocks. She's given 90 mocks, as she said. And apart from that, she's also given the previous year question papers, right? जैसा कि आप सबको भी होता है, initially जब मैं बोलता हूँ previous year question papers करो, तो आपको डाउट होता है क्या फायदा होगा इससे, क्या नहीं होगा. इनको भी हुआ था. ठीक है कि क्यों देना भाई previous year paper, उससे क्या होगा. But I'm sure Mahira, previous year papers, the importance now I'm sure even the pattern has changed, तो भी आपको समझ में आ गया होगा. The amount of confidence it gives you. Definitely, amount of confidence, and it teaches you that even when there's a time constraint, how to apply yourself fully. Because the moment there is such a huge time constraint, you panic. So even when you know certain questions, you'll end up attempting them wrong because you feel your blood flowing so fast that you can't concentrate, and you can't bank on adrenaline to get you through an exam so important. So it allows you to relax into that routine, so that when you go to attempt the actual paper, you feel like it's just another mock, and it does not feel like something so great, and you'll be so reluctant to mark every question. So you have your knowledge to bank on and not your adrenaline. That jo ho gaya us moment mein ho gaya. So I think that is why 10 years is very, very important. Absolutely, absolutely. Mahira, यहाँ पे है कि how many questions did you practice on a daily basis across sections? एक आप अगर आप थोड़ा सा एक आइडिया दे दें कि भाई डेली क्या आपका टाइम टेबल रहा करता था, कितना उसमें से how much was it practice, how much was it conceptual learning? Very difficult question this is, because it varied greatly, and not even just month to month, sometimes week to week. So I tried to be done with the concept, I think, for the first 7-8 months. And then I think the last 3 months, I was giving a mock almost every day. So one mock every day. And in the beginning, it feels like a lot because you attempt a mock, you analyze it, and then there are certain other things you have to do. But once you fall into routine, it's not that difficult. I can't tell you how many questions I did per day. One day I would just do the concept, other day I would just do the question. So I think this is something which is extremely specific from individual to individual. You find out what suits for you, and then you implement that. Absolutely, well said. बहुत अच्छा आंसर किया आपने मायरा. मायरा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे साई का. सर, please ask her that does she read the questions first or does she read the passage and then the questions? So I read the question first and then the answer, but that is something I do which suits me. Now, I had my mentor, sir, only tell me that there are three ways to going about it. You first do the questions, then the passage, first the passage, then the questions, or you can do a part of the passage, then questions, then passage, then questions. So I tried all the three methods in different mocks. I figured which one worked out the best for me, and I followed that. So this is the benefit you have when you start preparing early. Sir will tell you 10 things, and you will straight up think, no, this is not going to work for me. But you try them anyway. You figure out if it works for you. You extract 5 things
that work for you and you implement them. But it is very important to try all 10, because sometimes there are some things that work out even when we don't expect them to. And that is why there is a mentor to tell you all the things possible so you can narrow it down. So I would not say follow my advice on this. Try all the three methods, find one and work on it. एब्सोल्युटली वेल सेड मायरा अगेन। तो दोस्तों ये देख रहे हो यार कितनी सारी एडवाइसेस मिल रही है आपको, जबरदस्त, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब हर बॉल पे 6 मारा जा रहा है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई कैसे काम चलेगा? भाई जल्दी से फटाफट से लाइक की बारिश कर दीजिए यहाँ पे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसी तरह के जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं मायरा आपसे। सर अब यहाँ पे दीपाली ने मुझसे पूछा है, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आप ही को आंसर करना चाहिए। डू वी नीड टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2020 और 2008? आपका क्या इसमें टेक रहेगा? From 2008, definitely 2008. Previous year, if you do it from 2020, that's just 2 years. So I think you should definitely try to do as many previous years as you can. And even though it does not sound very rational right now, once you're done with it, then you realize how big impact it was. And I think this is, I wouldn't even call it subjective. I would say each and every person writing CLAT should do it from 2008 onwards. Consider this something non-negotiable. Definitely. वेरी गुड मायरा, वेरी गुड, बिल्कुल सही भाई, मैं एकदम 100% अग्री करता हूँ मायरा से। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आपके लिए एकदम गोल्ड डस्ट है और कॉन्फिडेंस देते हैं आपको कि आपको खुद पता चल जाता है कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लेते हैं, यू कैन डेवलप दिस स्किल ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज वर्थ रीडिंग एंड व्हाट इज टू बी अवॉइडेड। ये समझ में आ जाएगा आपको। तो जरूर दीजिए क्लैट का भी और एलेट का भी, अभी टाइम भी है आपके पास, तो ये हमारी दोनों की एडवाइस आपके लिए होगी। यहाँ पे अब आपकी सीक्वेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज योर अटेम्प्ट ऑर्डर। बेसिकली सीक्वेंस से इनका मतलब यही होगा, आपका अटेम्प्ट ऑर्डर क्या था। ये बात है कि भाई सबका अटेम्प्ट ऑर्डर अलग होता है, ठीक है। तो ये ऐसा मत कीजिएगा कि इसकी यार 90 आई मायरा की, हमारे भी 90 आएगी, हम भी यही करेंगे, राइट। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्वीट स्पॉट, बट लेट्स अंडरस्टैंड हर रीजनिंग्स, हर रैशनल बिहाइंड इट। प्लीज मायरा। So again, as Sir said, I think you should attempt at least one mock starting from each of the 5 subjects and then figure out which one you do best. Now, I had decided on a certain order and looking at the paper, it didn't work for me. So my strongest subjects to the weakest, because strongest, it gives you a lot of confidence to, attempt the weakest. If you start from weak, you are nervous from the very beginning only, and then you don't have the confidence to go on with the rest of your paper. It is very important to start strong and end weak, because there's a very high chance that you won't even have time in the end only. You'll end up leaving on your strong part. Now, I did legal. Legal was my strongest subject. I think it becomes strongest for everyone because we are all law students. We like law subjects. So mine was legal, English, critical reasoning, GK, and maths. GK and maths were always a little dicey for me, so I kept them for the end. And yes, this is how I ended up attempting. But my original order was very different. So be prepared for this as well, that you might have to change it last moment. And it does not mean that it will break your exam. You still have a very good chance. एब्सोल्युटली। और दोस्तों आपने सुना होगा कई लोग पिछली बार कंप्लेंट भी कर रहे थे कि काश हम लीगल पहले नहीं करते तो हमारे लिए एडवांटेज होता। इन्होंने किया लीगल पहले तो भी शी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 90, जैसा कि आपको पता है। तो यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। आपका जो आपने एक बार जो चुन लिया आपने अटेम्प्ट ऑर्डर, बहुत ज्यादा रिजिड मत रहिएगा। जैसा कि मायरा ने बोला कि ये शुरू में ऐसा नहीं था, बाद में चेंज हुआ ये इनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शी आइडेंटिफाइड व्हाट इज द बेस्ट ऑर्डर, अटेम्प्ट ऑर्डर फॉर हर। तो आपको भी अपना आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर अटेम्प्ट का और फिर उसी को आपको फॉलो करना है जी। चलिए अब अगला एक क्वेश्चन एक और है मायरा। सर प्लीज आस्क हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड इन ऑल द सेक्शंस। अब ये भी इट इज अगेन सब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, पर मैं समझ सकता हूँ आप लोग क्यों पूछना चाहते हैं मायरा से, तो मैं जरूर पूछ लूंगा। मायरा
section wise, if you could just please help us. I know you, but काफी time हो गया, थोड़ा सा if you could give me a rough idea, that would do. So my target time would be 20 to 25 minutes per section. So if I'm exceeding that, I know that now I'll have to rush the next section. So that is the time that was allocated. But if you exceed, usually one section is difficult, the other sections are relatively easy. Easy, correct. So time limits are not for you to absolutely follow and panic if you're unable to. They are to give you a sense that you are in control. That if you spend 5 minutes extra, then the next section you work on those 5 minutes. So yeah, 20 to 25 minutes. All right. And मतलब अगर मैं आपको ये पूछूं मायरा कि आपका लास्ट 7 days का प्रिपरेटरी प्लान क्या था? ये क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जा रहा है, तो पूछ ही लेते हैं. लास्ट 7 days, चलिए बहुत लंबा टाइम हो गया, पहले छोटा टाइम हो गया, पहले 3 महीने की बात कर लेते हैं. लास्ट 3 months, राइट? अब बोर्ड एग्जाम्स भी हैं. आपके केस में थोड़ा अलग था, बोर्ड एग्जाम्स की थोड़ी चिंताएं कम थी, बट आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत आप लगातार उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे थे. तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत चिंता रहती है बोर्ड एग्जाम्स की. माहिरा को भी बहुत चिंता थी बोर्ड एग्जाम्स की. इनको नंबर भी चाहिए थे, बोर्ड एग्जाम्स में भी नो कॉम्प्रोमाइज वाला स्टेट था. तो हाउ डिड यू मैनेज बोर्ड एग्जाम्स विद योर 12th? हालांकि एट द एंड बोर्ड नहीं हुआ जो भी है, बट फिर भी कैसे आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन साथ में मेंटेन करी? Yeah, so it is true that while I did not give boards, I was equally stressed about preparing about it, because even I didn't know until the very last moment that I'll not be attempting. So I did have the expectation and stress on me. So now sir asked me how I managed. A very easy answer is that I did. I left it. Because in the beginning of your preparation, you can give your school studies first priority and you CLAT second. But now with 3 months left to go, you are competing with children who do not care about their board marks. You are competing with children who have been studying for 2 years. Correct. That is what your competition is. So what I did was, my strategy was that I'll just study for boards. I'll start studying for boards 1 month prior to the board. And in that 1 month also, I had decided that I'll dedicate at least 1 or 2 hours to CLAT preparation, because you can't catch up after 1 month. You need to stay in touch. You need to have some essence of CLAT. So I understand there is family pressure. My mom was very supportive of the fact that I can get it 55% in 12th and be okay with it. I understand that that's not the case in most of the situations. So I would say try to start off your day with CLAT preparation when you are the freshest, when you are the most receptive, and then maybe dedicate I don't know, 2-3 hours to studying for boards. Now, no matter you get 75% or 95% in boards, that is not going to help your law college or your CLAT rank. So have enough confidence in yourself that will make it in law, and if possible, maybe compromise on your boards a little. So yeah, see if that is an option for you. If it is not, I heard that some people, what they did was that they would study for CLAT the 5 days and 2 days weekend, they would study for boards. If this works for you, try it out, but I understand how hectic it might get. Correct. But it's just for 3 months, so maybe give it a try. Absolutely, you can try and figure out what works for you the best. बिल्कुल सही कहा मायरा ने. तो यहाँ पे क्वेश्चन है सृष्टि का, हाउ मेनी आवर्स डिड यू गिव फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन? इसका आंसर मैं दे देता हूँ आपको, राइट? तो इन्होंने बेसिकली, शी वाज अ स्टूडेंट, मैं कह सकता हूँ 100% श्योरिटी के साथ, इन्होंने घड़ी देख के पढ़ाई नहीं करी. शी वाज नॉट स्टडीइंग हैविंग अ वॉच ऑन हर कि 3 घंटे हो गए बस बहुत है, 4 घंटे हो गए बहुत है. ये नहीं है. आप जो है पूरी तरह से एवरी आउंस ऑफ हर एनर्जी वाज गिवन टू द कॉज दैट वाज क्लैट, राइट? ये दिया तभी आज रिजल्ट भी जो है आप देख रहे हैं. तो यू हैव टू बी कंप्लीटली डिवोटेड, और जैसा कि आप ये देख रहे हो, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, टू द पॉइंट आपको एकदम आंसर्स मिल रहे हैं, एकदम ही जबरदस्त वाले. वो क्यों मिल रहे हैं इतनी क्लैरिटी के साथ? बिकॉज शी हैड दिस मच क्लैरिटी व्हाइल शी वाज प्रिपेयरिंग, राइट? शी हैड दिस क्लैरिटी कि मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है, मेरी ये प्रायोरिटी है, और उसके लिए क्या करना है, शी हैड अ प्लान फॉर दैट एज वेल, राइट? तो वही प्लान हमें भी अपने लिए बनाना है. जरूरी नहीं है, जैसा कि मायरा ने बोला, सेम प्लान जो मैं बना रही हूँ वही बनाइए. इन्होंने एक और अल्टरनेट भी दिया, 5 दिन और 2 दिन वाला. कुछ बच्चों ने वो भी ट्राई किया, उनके लिए वो वर्क किया. यू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स फॉर यू द बेस्ट.
ऑलराइट सर, हर क्लैट स्कोर और इनका, चलिए आप भी बता दीजिए मायरा, आपका क्लैट स्कोर और क्लैट रैंक एक बार सबके लिए बता दीजिएगा प्लीज। My CLAT rank was 90 and my score was 103.25. 103.25 and right now she's studying in NALSAR, NALSAR, Hyderabad. यस, नलसार हैदराबाद में ये पढ़ रहे हैं, राइट। तो जो आप लोगों का ड्रीम कॉलेज है, आई एम श्योर बहुत लोगों का वहां पे ही शी इज एक्चुअली स्टडिंग, राइट। एनी लास्ट क्वेश्चंस दैट यू हैव फॉर हर, फील फ्री टू आस्क मी, राइट। ये मौका आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, मैं कोशिश करूंगा कि एक रैपिड फायर कर ले मायरा के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम आंसर कर पाए। ऑलराइट, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नलसार के इंफ्रा के बारे में, हॉस्टल कैसा है, कॉलेज कैसा है। तो मैं जानता हूँ आपने मुझे तो बता ही दिया, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए सभी को कि अभी तक क्या आपको सुनने में आया है इसके बारे में। मायरा आवाज नहीं आ रही आपकी, यू नॉट ऑडिबल, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, श्योर। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, माहिरा इज येट टू, अभी क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक द कॉलेजेस हैव नॉट ओपन्ड, अभी वापस से बंद हो गए थे, अभी मार्च में वापस से रीओपन होंगे, जैसा कि इन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो मार्च में जाके और फिर ये कैंपस लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि होगी बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए। ऑलराइट, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब इन्होंने तो मतलब लगे रहे ये लंबे समय तक, साल भर प्रिपरेशन किया है इन्होंने। हाउ इज द लाइफ एट नलसार, हाउ इज द लाइफ एट नलसार, how has it changed? So I only have a partial answer for this because I have not been to the campus yet. But even with just the online experience, I would say it is life-changing. It is going to change you in the ways you don't expect it to. And it's going to be a very bittersweet experience. But let me assure you, it is absolutely amazing. It is better than you'll ever see it coming. If you genuinely like law, things related to law, legal studies, you are going to have a great time here. You know, if you're spending a lot of time, if you're sacrificing on a lot of things right now to get a good rank, let me tell you, it is worth it. You will not once look back and think that, oh, I wish I had done this. Once you're in law school, you know, it's going to change you in the best way possible. And I think every minute you put in CLAT preparation, it's all going to be worth it. Absolutely. Well said, Mahira. चलिए, तो भाई काफी क्वेश्चंस आपके आंसर करे भाई, मायरा ने बहुत सारे ट्रक लोड्स और इतना सारा ज्ञान आपको मिला है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो कि मतलब इट विल बी यू नो क्वेश्चन व्हिच आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड लाइक टू हियर द आंसर ऑफ। हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 90, बताइए जरा कैसे 90 AIR-90 कैसे अचीव की जा सकती है, कुछ जो टिप्स आप दे सकते हैं टू रीच देयर, राइट। एक तो होता है कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, राइट, आपने जो बेयर मिनिमम जस्ट ऐसा, बट you know excel to the top 100 students who were preparing for 2021, तो मतलब आप top 100 students में आए हो, तो ऐसा क्या आपने कुछ अलग किया या फिर क्या आपने किया है which is a difference creator? Difference creator, I would say consistency. You need to put in day after day of work. You can take breaks, but remember that you're taking a break from preparation, that you're not taking a break. I mean, it's not a very long break. You need to stay in touch. You need to make CLAT your lifestyle. You know, it's not just a study. It's not something that 5 subjects you study on and off. No, you need to make it a very big part of your life. And always remember why you're doing it for. If you feel demotivated, find things to motivate you and never lose heart. You know, some days you're going to do very bad. Some days you will not want to study. Someday every answer you will get wrong. Don't count on happiness. Don't count on excitement. Count on discipline. I think that is what set me apart, because I was studying even when I was demotivated. I was studying even when I didn't want to. I was studying when everybody else was having fun. When COVID was getting a little better, everybody was out. I was not, because I had a very clear goal in mind that this is not something that is easy, but this is a challenge that I'm going to achieve. Another thing I would say is be truthful to yourself, because no matter your parents, your mentors, your teachers, nobody knows better than you what stage of preparation you are. If you are putting in the hard work required, be honest to yourself, and CLAT isn't going to crack itself. You have to do it.
And as long as you're truthful to yourself, as long as you're putting in genuine effort and you're consistent, I don't think there is any way that you can fail. There is absolutely no chance, because you're leaving nothing to chance. You're relying on your knowledge, on your hard work. And I think that you are not going to see the result of what you did one day before the exam, what you did 1 week before the exam. It's going to be a cumulative of all the preparation you've done till date. So count on that. One day is not going to break or make your deal. It's going to be the cumulative effort of all the months, all the things you've sacrificed in. And again, it will be very worth it. So yes, be consistent and believe in yourself. Absolutely wonderful way to end the session. Need I say more? Right? So immensely happy, right? I'm immensely proud, and this was something which I visioned last year, right, when I first basically met Mahira, though it was digitally, right? जब पहली बार जब हमने देखा इनके क्वेश्चंस आंसर करे, तब से I was confident, because वही है, लिफाफा देखकर ही हमें तो पता चल जाता है जी क्या होना है वो, right? तो वैसा ही कुछ सीन था, right? She was hard worker, she was consistent, and she was doing whatever was told. And look at the results right now, amazing results, fabulous results, right? आज का ये session probably it's one of the most fruitful, might I say, the most fruitful session that is there here for you guys, right? आप जरूर ये देखिए, जो भी माहिरा ने जो भी आपको learnings दी हैं, उन सब learnings से आप जितना सीखे हैं, आप हमें बताइएगा कमेंट्स में. अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, please feel free to ask in the comments. I will request Mahira to please take some time off her busy schedule and do answer those questions whenever she gets time. तो जरूर आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं माहिरा से. शी इज अवेलेबल. आई विश कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मुझे कोई AIR-90 आके गाइड कर देता. ये मौका है आपके पास. Mahira has taken out her time to come and answer all your questions and all your doubts. So join me again in thanking Mahira. Thank you so much, Mahira, for your time, for sparing your much. I'm sure very occupied you are right now, but फिर भी आपने time spare किया हमारे लिए, students के लिए. मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ. Thank you so much. Sir, thank you too. I would say that if, I had a lot of people helping me, but if there is one person who is, highly responsible for my success, it is you. I would say that nobody helped me, achieve this as much as you did. And I don't think that if it wasn't for you, I would have been sitting here. So, sir, thank you for everything. अरे बिल्कुल, आपका effort is all yours and I'm really really proud, Mahira, and always will be. तो दोस्तों, ये थी Mahira Gupta from NALSAR, Hyderabad, a student, a student who cracked the exam in a first attempt, and that too, scoring All India rank 90 is absolutely an amazing feat in itself, right? So this was all for you guys today in this session. Keep watching us for more such sessions in the future. If you haven't subscribed already, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो भाई किसका इंतजार है? फटाफट से लाइक का बटन दबाइए और हम मिलेंगे in the next session. Till then, take care. Goodbye. Sayonara. मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द. ध्यान रखिएगा अपना.